Okay, first question, A ratio B is equal to 1 divided by 2. A ratio B is equal to 1 divided by 2 ratio 1 divided by 3. In last class, I told you that you can write it like in which form? A ratio B को हम किस तरह लिख सकते हैं? B ratio A. No, A ratio B will not be equal to B ratio A. ये mistake नहीं करना आपने. Like you can write it in the division form, A divided by B. Okay, A ratio B you can write like हाँ. A divided. Okay, so this will be 1 divided by 2 divided by 1 divided by 3. So A divided by B, that will be equal to 3 divided by 2. Cross multiplication कर लो. So your 2A will be equal to 3B. अब ये सेकेंड रेशो कर लेते हैं. दिस विल बी B रेशो C. This will be B ratio C is equal to 3 ratio 4. We can write it like B divided by C is equal to 3 divided by 4. Cross multiplication कर लो, so 4B will be equal to 3C. So अब हमारे पास यहाँ से आप B की वैल्यू फाइंड कर लो. So your B value will be equal to 2A divided by 3. Now you will need to put B value in this equation. So this will be B value is 2A divided by 3 is equal to 3C. So this will be cross multiplication कर लो. So 8A 9C. So your A divided by C will be equal to 9 divided by 8. So it means that your A ratio C will be equal to 9 ratio 8. अच्छा, this is the answer of this question. Okay, ये समझ आ गया आपको कि नहीं? समझ आ गया. Okay, you can do it like this: A ratio B ratio C. Okay, so your A is given to you, that is 1 divided by 2. B is also given to you, that is 1 divided by 3. एंड C, अच्छा नेक्स्ट रेशो इज 3 रेशो 4, तो वो आपने नीचे लिखना है. अच्छा, यहाँ पे आई विल नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ A रेशो C. सो व्हाट यू विल डू, यू विल नीड टू मेक B सेम इन बोथ केस. इसको आपने सेम रखना है. सो किस तरह सेम रखना है? लाइक यहाँ पे देख लो, इसको आप सेम वैल्यू बना लो. तो किस तरह बना ले? इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस रेशो बाय 2, sorry, by 3. If you multiply this ratio by 3, yeah, if you multiply this ratio by 9, so you will get 3 over here. इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो. सो यहाँ पे आपके पास 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास 9 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा. नीचे भी 3 आ गया और 4. सो आपका B कांस्टेंट हो गया. इन बोथ केस योर B इज कांस्टेंट. ओके, so now your A ratio, you can write it like this: your A ratio C will be equal to 9 divided by 2 ratio 4. This will be your final answer. ये इसको अगर आपने और सिंप्लीफाई करना है तो आप इस तरह सिंप्लीफाई करो कि A डिवाइड बाई C will be equal to 9 divided by 2 divided by 4. So your A divided by C will be equal to 9 divided by 8 हो जाएगा. Yes, okay. Question number 2. 3 types of coffee beans A, B, C are blended in the ratio of 3:5:7 to make a bag of coffee powder. Given that the bag contains 45 kg of coffee powder, find the mass of each type of coffee beans in the mixture.
Acha, we have three types of coffee beans. Okay, that is A, B, C. Okay, total mass of coffee is 45 kilogram. We will need to find the mass of each type of coffee beans. Okay, so mass of A आपका क्या हो जाएगा? If you want to find the mass of A, so that will be equal to 3 out of total. 3 out of total कितना है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. नीचे आपका 15 आएगा. 3 out of 15 is the A coffee bean times 45. Total mass is 45. So you will solve this. So this will be equal to 9 kg. So it means that A type have mass that is 9 kg. अच्छा, mass of B क्या हो जाएगा? That is 5 out of total, which is 15 times total mass, which is 45. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15 किलोग्राम. मास ऑफ सी क्या हो जाएगा? दैट इज 7 आउट ऑफ टोटल टाइम्स 45. इससे क्या आ जाएगा? 21 kg. अब if you want to check that, so out of 45, 9 kg is the mass of A, 15 kg is the mass of B, 21 kg is the mass of C. If you want to check that, so what you will do, you will need to add all these numbers. So from this you will get 45 kg. If A costs 7 per kg, B costs 10 per kg, and C costs $13 US dollar per kg, find the cost per kg of the mixture. This is A cost 7 per kg. So A cost 7 per kg. So cost of A क्या हो जाएगा? 7 US dollar per kg, per 1 kg. ओके आयशा, यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो. सो ए का कितने मास ऑफ ए इज 9 kg. सो इफ यू आई मल्टीप्लाई दिस बाय 9 kg, so this kg will cancel out by this kg, so here I will get 63 US dollar. ये cost of A आ गया. ओके, this is not the mixture, this is only one component. Cost of B क्या हो जाएगा? That is given to us 10 US dollar per kg. So mass of B क्या है? That is 15 kg. So for 1 kg the cost is $15. For 15 kg the cost will be equal to $1,500 US dollar. Okay, for C cost will be equal to so for 1 kg the cost of C is 13 US dollar. For 21 kg, this kg will cancel over this kg, so 13 times 21 से क्या आएगा? 273. अब इन सारे कॉस्ट को आपने ऐड करना है. सो यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ ए मिक्सचर. That should be 1836 US dollar. Okay, अच्छा, the question is find the cost per kg. So cost ऊपर आपने लेना है टोटल कॉस्ट, पर kg मीन्स के टोटल मास आपने नीचे लेना है. सो टोटल कॉस्ट कितना था? 1836 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 45. So solve this, so you will get total cost per kg.
you will get 40.8 US dollar Okay. per kg. Okay, this will be the answer of 40.8 US dollar per kg. yeah. So this is the cost of a mixture. उन्होंने कहा कि find the cost of a mixture, so that's why I add all these US dollars. Okay. Oh, okay. Yes, फिर mixture में मिक्सचर में 1 kg. yeah, mixture A plus B plus C. Okay, it means कि mixture contain A type of coffee bean, B type of coffee bean plus C type of coffee bean. Okay, so that's why I find the total cost, then I divide it by total kg. अच्छा, why I divide cost by kg? Because this is present in the question. Question में क्या है? Cost per kg. So you will write it like cost, ऊपर लिखते हैं per kg. तो total cost ले लो, total kg ले लो, so you will get this. अच्छा, confusion कहाँ पे है? कौन से step में आपको confusion हो रही है? और कंफ्यूजन नहीं हो रही. स्क्रीनशॉट ले लो if later on you want to solve this question और आपको confusion हो तो आपके लिए ये help out करेगा. स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ले लिया है. गुड. नहीं. नहीं लिया? हाँ, ले लिया. अच्छा, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि लेटर ऑन आपको इजी हो. ओके. अच्छा, box contain 36 book and some toys. Okay, toys, the amount of toys is not given to us. Okay, the ratio of the number of books to the number of toys is etna. After some toys are given away, the ratio of the number of books to the number of toys become etna. Find the initial number of toys in the box. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमारे पास बॉक्स में क्या है? बॉक्स में हमारे पास बुक्स प्लस टॉयज़. ओके, तो बुक्स प्लस टॉयज़ हमने सबसे पहले करना है. इसका एंड आंसर क्या है? तो इट मीन्स कि 45 है. ओके, राउंड ऑफ कर लो, सो यू विल गेट 44.5 आ रहा था इसमें. करेक्ट आंसर है. ओके, गुड. अच्छा, now we will need to find the number of toys that are given away. So what do you think? क्या करना होगा यहाँ पे? अच्छा, ये मेथड आपको समझ आ गया जो मैंने किए? अब हमने न्यू टॉयज का अमाउंट फाइंड करना, फिर माइनस करना है. यस, गुड. अच्छा, अच्छा, यहाँ पे बॉक्स कंटेन 36 books and some toys. Okay, I am taking toys as a T. Okay, इसको आप U भी ले सकते हो. So the box contain 36 toys and T. So number of toys will be equal to, the ratio is given to you. The number of books to the number of toys is 4:5. So number of toys is 5. So 5 out of total amount, that is 5 plus 4, which is equal to 9. So 5 out of 9 times 36 plus T. Okay, 36 plus T, total amount. This is your total amount जो हम लेते थे पहले. Okay, so the number of toys will be equal to 5. This is the ratio of toys to the 9, which is the total ratio, times total amount. Total amount is 36 plus T. Okay, that will be equal to T. Number of toys is T. I already represent the number of toys by T. ओके, सो दिस विल बी T इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 डिवाइड बाई 9 टाइम्स 36. सो दैट्स विल बी 20 प्लस 5 डिवाइड बाई 9
दैट्स विल इक्वल टू 0.55t हो जाएगा। तो आपका t माइनस 0.55t विल बी इक्वल टू 20 आ जाएगा। इसको इस साइड पे ले जाओ टुवर्ड द लेफ्ट साइड। सो 1 minus 0.55 will become 0.45t will be equal to 20. So your t will be equal to 45. Okay, you will solve it like this. अच्छा, अब now I will need to find the number of toys that are given away. Okay, so यहाँ पे second statement is after some toys are given away, the ratio of number of books to the number of toys become इतना. Okay, so it means के this will look like toys आपके पास 45 आ गए, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या आ गया, that is 36 plus 45, 81 आ जाएगा। Yeah. ओके, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह कर लेते हैं, लाइक आफ्टर गिविंग सम टॉयस। ओके, तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी 36 प्लस T2 हो जाएगा। ओके, T2 इज़ द नंबर ऑफ टॉयस आफ्टर गिवन अवे, दिस इज़ द नंबर ऑफ टॉयस बिफोर गिवन अवे, दिस इज़ द नंबर ऑफ टॉयस आफ्टर गिवन अवे। तो दिस विल बी योर टोटल अमाउंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉयस after given away, that will be equal to, रेशो कितना है टॉयस का, 11 out of total, 11 out of 33 times the total amount after given away, so that is 36 plus T2. This is 23. Okay, number of toys after given away is T2, तो यहाँ पे T2 हो जाएगा 11 divided by 23 times 36, that will be equal to 17.21. Okay, plus 0.5 आ जाएगा T2, इसको उस साइड पे ले जाओ, सो दिस विल बिकम 1 minus that should be equal to 17, so 1 minus 0.5 will be equal to 0.5. So your T2 will be equal to 17 divided by 0.5. That will be equal to 34. Okay, so the number of toys after given away is 34 और number of toys पहले कितने थे 45, तो कितने total number of toys, Sir, should I tell you the answer? where The cost of the placing an advertisement in the newspaper compromises of a fixed cost of $3.50, a variable cost that depends on the number of words. Each word costs 25 cents. Find the total cost of the planning advertisement containing 22 words. Okay, the total cost of placing an advertisement in a newspaper comprises of a fixed cost of itna and a variable cost that depend on the number of words. Each word costs 25 cents. Find the total cost of placing an advertisement containing 22 words. Okay. So what do you think क्या करना होगा यहाँ पे? एक second.
In $1 we have how many cents? Uh, 600 cents. In $1 we have 600. No, 100. 100. Good. Okay, so 3.5 US dollar will be equal to 350 cents. Okay, तो यहाँ पे each word cost 25 cents. Each word cost 25 cents. So one word costs 25 cents. So 22 words will cost how many cents? One word, 25 go double, like 25 times 2, and then 25 times 22 will be the total words. For basically 25 times 22 to find out the cost of 22 words. Okay. So what you will do, you will multiply 25 times 22. Yes. Okay, so each word costs 25 cents. Okay, so 22 words will cost you, तो 22 times 25 से क्या आएगा? 2 times 5 is 10. 550. 2 times 2 is 4, 5. 50. Yes, 550. 2 times 50 plus 550. Yeah, 550. अच्छा, in US 550 plus $3.05. और 9 US dollar. Okay. No, नहीं, पहले 550 होगा $1.05. No, 550 होगा $5.05. Actually, this will, yeah. $5.05. Okay, so cents को cents के साथ add कर लो, so you get 900 cents. So that's will equal to 9 US dollar. Okay. So the total cost will be equal to 9 US dollar. N पे आंसर क्या है? 900 cents. Yes, 900 cents. Okay, ये समझ आ गई आपको कि नहीं? Okay. Okay. Next part is if Michael does not want to spend more than 15 US dollar on an advertisement, what is the greatest number of word he can use? So on a total cost हमारे पास क्या है? That is equal to fixed cost. ये $9. 900 cents and $9. If Michael does not want to spend more than $15 on the advertisement, what is the greatest number of words he can use? The ये हमने उसी तरह करना है. ओके, जिस तरह यहाँ पे हमने किया था. हमारे पास 350 सेंट्स थे. ओके, इसको सेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इजी रहे. दिस विल बी 1500 सेंट्स हो जाएंगे. ओके, और ये आपका 350 सेंट्स हो जाएंगे. ओके. और ये आपका 25 सेंट्स आ जाएंगे. तो 25 सेंट्स पर वर्ड. ओके, 25 सेंट्स ईच वर्ड कॉस्ट 25 सेंट. तो 25 सेंट पर वर्ड. तो टाइम्स यहाँ पे हमने क्या किया था? 22 के साथ मल्टीप्लाई किया था. नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था. लाइक वी मल्टीप्लाई 22 टाइम्स 25, तो 550 आ गया था. बट इन दिस पार्ट n is the number of word which is unknown. The total amount is given to me and I will need to find the total number of words. Okay,
I will need to find the n value. So ये क्या हो जाएगा 1500 minus 350, 1500 minus 350, that should be 1150 cents हो जाएंगे. So your n will be equal to 1150 divided by 25. So your n will be equal to 46. So it means that the maximum number of words will be equal to 46. Okay, this will be the maximum number of words. एंड पे आंसर चेक कर लो. चेक कर रही हूँ. 46 करेक्ट है. Okay.